The news that we have for you right now is in fact from Maharashtra. Viewers, the row over the Marathi language in Maharashtra has snowballed into a bigger issue now. Days after M&S workers thrashed a 48-year-old shopkeeper, Maharashtra Minister Nitesh Rane has now added a new twist to the entire controversy. The BJP leader has called out M&S workers for not only targeting non-Marathi speaking Hindus. In fact, in a controversial remark, the minister asked whether M&S workers have the guts to impose Marathi on Muslims. Listen in. मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। And now reacting to this controversy, M&S leader Sandeep Deshpande has defended the actions of his party workers. Listen in. And they said that Hindi GR has been cancelled by the government and we are celebrating for that. So that person said कि यहाँ तो कोई मराठी बात ही नहीं करता है, यहाँ तो हिंदी ही चलती है. That spiked the conversation between them. And then the person asked him, see, this is Maharashtra and tell me which language is spoken in Maharashtra. Instead of saying that Marathi is spoken in Maharashtra, he said, in Maharashtra, all languages are spoken. Is this the way you are trying to insult Marathi? And if you insult Marathi, let me be very clear on the camera. Kana khaliz basil. If you try to insult Marathi, kana khaliz basil. So M&S clearly seeing it as an insult to Marathi language. BJP, on the other hand, continues to maintain that learning and respecting the regional language is important. But one can't take the matter into their own hands. One can't break the law of the land. Listen in. देखिए, जो राज्य में रहते हैं वो राज्य की भाषा आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर व्यक्ति को अपनी अपनी मातृभाषा के ऊपर अभिमान है। और जो वहाँ रहने जाता है, जैसे मैं राजस्थान से हूँ लेकिन मराठी भाषा पे अभिमान है और महाराष्ट्र पे अभिमान है। मुझ जैसे व्यक्ति को इतना महाराष्ट्र ने दिया तो स्वाभाविक अभिमान ही। लेकिन मनसे के लोगों ने 7 लोगों ने जाके दुकान में जिस तरह से मारपीट की थी, ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, इसलिए उसका हम निषेध करते। यदि उनको लगता है, मनसे हो या किसी को भी लगता है कि भैया इनसे गलती हुई तो पुलिस कंप्लेंट करे, सरकार के पास कोर्ट पे करे ना। मराठी मानुस हो अमराठी मानुस हो, हाथ उठाने का अधिकार किसी को किसी पे नहीं है। भाषा पे कोई विवाद नहीं है, सब भारतीय भाषा है और जो मराठी हैं वो मराठी बोलते ही हैं, जो नहीं बोलते हैं उन पर भी जोर जबरदस्ती इस तरह से मारपीट करना ये कहीं से भी सही नहीं है। Its attack on the M&S, the Congress has hit out at the party, stating that its ideology has always been rooted in such politics, targeting people, especially from North India, those who come from Bihar and Uttar Pradesh. Listen in. M&S का तो शुरू से यही रहा है, वो बिहारियों के खिलाफ, कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ, कभी कुछ दक्षिण भारतीयों के खिलाफ हमेशा वो इसी तरह का आह्वान करते रहते हैं या उनके साथ इस तरह का सलूक करते रहते हैं। तो उनका तो विचारधारा उसी पर आधारित है, वो उससे ऊपर उठ नहीं पाते हैं वो। And viewers, to understand the root cause of this issue at large, my colleague Rakesh spoke to the same M&S workers who sparked this entire controversy by slapping a shop owner. Times Now posed some rather basic and straightforward questions to the M&S workers about the Marathi language that the issue specifically they raised. But much to our surprise, all they did was deflect, as they didn't really have the right answers. Listen in. मांगा गया क्या वो सही है या गलत? देखिए, सही गलत का जवाब तो हमारे नेता अविनाश जाधव ने दिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोपोगेंडा चल रहा है 2-3 दिन से, आधा वीडियो दिखा के जो मनसे को, मराठी मानुस को जो खराब करने का काम करे, मैं आता हूँ आपके पास।
मैं मराठी में ही इनसे सवाल पूछता हूँ. आप बोल रहे हैं आपको मराठी से बहुत प्रेम है. मेरे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए की मराठी भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहे? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. सांगा ना आपण किती मी प्रेम काय आहे. सांगतोय अच्छा, हे हे किती. सांगा आपण मराठी भाषा दिवस केव्हा साजरा करतो? मिनिट याच पद्धतीचे 27 फेब्रुवारीला आणि कोणाच्या कवी कुसुमाग्रजांच्या स्मरणार्थ आणि मला सांगा किती स्वर आणि किती व्यंजन? तो विषय इकडे येत नाही. इकडे आपण कशासाठी माहित आहे की एक मिनिट सांगतो मला स्वर आपल्याला माहित आहे की नाही? आपला विषय काय आहे हे पहिल्यांदा मराठी भाषेत आपला पहिला कादंबरी कुठली? ऐका मी काय पहिलं काव्य कुठलं ते सांग. तुम्ही लोकांना चुकीचे मेसेज देतायत या आपण सांगता ना, प्रश्नाचं उत्तर नाही देत तुम्ही. आज घटना मी मराठीत विचारतो तुम्हाला. हो भाऊ, नको ते प्रश्न विचारू नका. मला माहितीये मराठीला उत्तर माहिती आहे. अपमान झाला ना त्याच्याबद्दल विचार. तुम्ही मराठीचा अपमान करताय. तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? परीक्षा घेतोय. कशासाठी? सांगा ना किती प्रेम आहे, किती प्रेम आहे. तुम्ही आमची परीक्षा घेणारे कोण? तुम्ही परीक्षा घेणारे कोण आहेत? सवाल मराठी का है, सवाल महाराष्ट्र का है, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं देगा. ये है सच्चाई महाराष्ट्र निर्माण सेना की, जो मराठी सिखाने के लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें खुद को मराठी भाषा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता. And now viewers, to get a sense of what the youth in Mumbai feel about it, we spoke to a group of youngsters. They shared a clear message. No language or culture should be forced upon anyone, and no one has the right to violate the law in its name. Let's have a look at this report. I want to speak Marathi, I can speak Marathi, but that is my personal choice, right? Okay, you can make it the state language of Maharashtra, because in Maharashtra we should speak Marathi, I agree. But it should not be imposed ki no, I will not speak to you because you're not speaking Marathi. I feel that is wrong. It should be a personal choice. What is your say? I want to say exactly the same because I am Gujarati. I am a outstation student here, and I feel the same that we should be the ones who decide what we want to speak. Hindi, Marathi, Gujarati, English, whatever language we want to speak. So it should not be imposed to us that Marathi hi bolo aisa. Okay. What is your say? Do you think Marathi should be made a compulsion, or in such a manner at least it should be a compulsion? It should be a personal choice, I think. An individual should decide what he wants to speak or in what language he wants to speak. So yeah. Okay. And you? I feel the same way. Everyone should be able to speak in whatever the language that they like prefer. Okay. And what will you say when you come across such pictures, such violent acts being done? This is wrong. I don't know what else to say, but it shouldn't be forced upon people. Okay. So do you think it is more of a political gimmick that is seen here in the state? I think so. I think people want to just like it's Maharashtra, right? And majority is Marathi speaking. So if you want to win, it's clear that it's just a political game that is going on with the languages. And in this whole politic game, people are coming in the picture and people are having to suffer. Like we see many instances where people are fighting over language, and I don't think that should happen, right? And what is your say? These friends are opposing the act which is being done. What is your say? I believe that more than a political gimmick, it might be the mindset of a small group of people that believe that saying this language is necessary if you are staying in this particular demographic place. But in the end, there are a lot of people out there who believe that there is a freedom of speech. You can say the language you wish to converse in. Let's shift our focus now to the latest coming in from Himachal Pradesh. It's Kangana